Okay, beta. So the topic is about reaction kinetics. Reaction kinetics means we will be talking about the rate of reaction and the factors affecting the rate of reaction. The topic is almost the same as it was in O levels, but slightly in a A levels style. Like for explaining the effect of temperature and effect of catalyst, we use the Boltzmann distribution curve. Otherwise, the things are exactly the same. Okay, so let's start with the basic definition or the basic concept of rate of reaction. Again, if I explain rate, तो हमें पता है कि whenever we are talking about the rate, either it's a rate of reaction or rate of anything, rate means the change divided by the time taken. है ना, इसी को हम रेट कहते हैं कि कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया. That's basically called the rate. Whenever we are talking about the rate of reaction means the change in the concentration of reactant or product divided by time taken. ठीक है, change in the concentration of reactant or product per unit time. And you know that if you're talking about a particular chemical reaction, if you're talking about a chemical reaction, just a second, please. So, concentration, or you can say amount. If it's a concentration, it must be mole per dm cube, and this is the time taken. Acha, if I'm talking about the concentration of reactant at time 0, concentration कितनी होगी? Maximum होगी reactant की concentration. जैसे जैसे time proceed करेगा, reactant की concentration कम होते होते ultimately it becomes 0. So this is the profile for the decrease in concentration of reactant. ठीक है, ये reactant की concentration है. In a similar way, if we talk about the concentration of product, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 पे 0 होगी एंड अल्टीमेटली बढ़ते बढ़ते इट बिकम कांस्टेंट. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है ना. अब अगर मैं चेंज की बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए फ्रॉम योर ओ लेवल्स कि द ग्रेडियंट ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज द रेट ऑफ रिएक्शन. है ना, इस कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है दैट्स बेसिकली द रेट ऑफ रिएक्शन. मेरा क्वेश्चन ये है कि डज द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ रिएक्शन? क्या रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहता है? नहीं रहता. बिल्कुल ठीक. तो क्या चेंज आता है? इनिशियली द रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम, है ना, बिकॉज यू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट. जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है रेट ऑफ रिएक्शन कम होते 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 अल्टीमेटली इट बिकम 0. सही है. तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली वी हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट. तो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है. जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है रिएक्टेंट यूज्ड अप होते रहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता रहता है. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, हम बात करते हैं इनिशियल रेट की. इनिशियल रेट मींस एट द स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट किस स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. दैट्स बेसिकली द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन. वरना टाइम गुजरने के बाद तो उसने कम ही हो जाना है. ठीक है, क्लियर? नाउ in any molecular system, molecules are randomly moving. ठीक है, they colliding with one another and with the wall of container. ठीक है ना. During this collision, this simply colliding with one another, the collision is perfectly elastic. O level से पढ़कर आए हैं आप. And they simply collide and bounce back. There are two conditions when two particles collide. Condition number 1, the particles collide, transfer their energy and bounce back. This is called unsuccessful collision. There is another collision and another condition
that दो पार्टिकल आए, they collide and they transform into a product. That's called the successful or effective collision. ठीक है ना? जितने ज्यादा इफेक्टिव कोल्यूजन होंगे यानी पार्टिकल्स कोलाइड होके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे उतना ज्यादा ही रेट ऑफ रिएक्शन होगा. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा. So there are two conditions for having an effective collision. दो कंडीशंस हैं. पहली कंडीशंस क्या? The particle must collide with any specific amount of energy or with a sufficient amount of energy. वो एनर्जी क्या होती है? The energy is called the activation energy. And they must collide with the correct orientation. अब ऐसा ना हो कि पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो आए और सिंपली कोलाइड करते हुए चले गए साइड बाय साइड. नो, दे मस्ट कोलाइड विद द करेक्ट ओरिएंटेशन. हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए जब भी आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो. सो सक्सेसफुल कोलिजन के लिए और प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए द पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी और विद द करेक्ट ओरिएंटेशन. ठीक है? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल कोलिजन. उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि हम पार्टिकल्स की एनर्जी को बढ़ा दें, दैट वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर, बट वी कैन नॉट चेंज द ओरिएंटेशन. उनके कोलिजन की ओरिएंटेशन को चेंज नहीं कर सकते, है ना? वी कैन नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर सिस्टम और उनकी डायरेक्शन को चेंज कर दें कि भाई अब ऐसे आके कोलाइड करो. ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है. तो हम दूसरा काम ये करते हैं कि वी इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम. हम कुछ ऐसा करते हैं कि पर यूनिट टाइम में पहले अगर 10 कॉल्यूशन हो रहे थे, सक्सेसफुल नहीं, टोटल कॉल्यूशन, तो अब और उनमें से दो इफेक्टिव कॉल्यूशन, तो हम कोशिश करेंगे अब 100 कॉल्यूशन हो तो 20 इफेक्टिव कॉल्यूशन हो जाएंगे. हाउ वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉल्यूशन पर यूनिट टाइम टू मेक द सिस्टम मोर क्राउडी. कैसे क्राउडी होगा? इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन. और कैसे क्राउडी होगा? इंक्रीज द प्रेशर. ठीक है? ये दो काम हो गए. क्या वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ कॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग आइदर द कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें या प्रोडक्ट या प्रेशर बढ़ा दें. We can increase the average kinetic energy of all the particles, increasing temperature. एक तीसरा काम भी कर सकते हैं. We can decrease the criteria of that sufficient amount of energy. यानी अगर वो क्राइटेरिया 100 किलो जूल्स का है, हम कुछ ऐसा करेंगे वो 50 किलो जूल्स पर आ जाए. Now you would have more particles having that 50 किलो जूल्स of energy. वो सारे सक्सेसफुल कोल्यूशन कर रहे होंगे. ठीक है? बात समझ आ रही है? So that's basically the idea of having an effective collision. Okay, so let's start. There are two conditions when particles collide. Number one, they collide and bounce back. After transferring energy. ठीक है? This is called
ineffective or unsuccessful collision. And in this unsuccessful collision, no product is formed. ठीक है? Second condition क्या है? The particle collide and transform into product. Called successful collision. Sorry, effective collision. ठीक है? अच्छा, इफेक्टिव कॉल्यूजन में क्या होगा? पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. देयर आर टू कंडीशंस फॉर हैविंग एन इफेक्टिव कॉल्यूजन. फॉर हैविंग इफेक्टिव कॉल्यूजन. कंडीशन नंबर 1, they must collide with sufficient amount of energy. That is greater or equal to activation energy. You know activation energy क्या होती है? Minimum amount of energy required for chemical reaction to start. ठीक है? And second, they must collide with correct orientation. ठीक है? ओरिएंटेशन का मतलब करेक्ट डायरेक्शन में अच्छा खासा हेड ऑन कोलिजन होना चाहिए. ठीक है? सो दीज आर द टू कंडीशन एंड बोथ ऑफ दीज कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड. अब मैंने आपको कहा कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग with the second option. We cannot change the orientation of the particles कि भाई आप इस तरीके से collide करें. We cannot go into the molecular system. So what we normally do, we increase the average kinetic energy of all the particles. So there are many particles having value equals to or greater than activation energy by increasing temperature. हम temperature बढ़ा देते हैं, सबकी energy बढ़ जाती है, ज्यादा particles होंगे जिनके पास वो energy होगी और उनका collision जो है वो effective होगा. Or we can increase the number of collision per unit time by increasing the concentration. ठीक है? यहाँ तक बात समझ आ गई. Collision theory से related थोड़ा बहुत questions MCQs में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं सारे पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, वरना टॉपिक इज ऑलमोस्ट लाइक एज ओ लेवल्स. नाउ you know about the factors that affecting the rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. हाँ भाई, पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन. क्या इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन का? इफ आई आस्क यू कि कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ता है? Yes, the system become more crowded. There are more particles present in a given volume, more collision, and hence more chances of having an effective collision. तो इसको लिखते हैं on increasing concentration of reactant. ठीक है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन से रिवर्सिबल रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आता. Reactants, there are more particles in a given volume
the frequency of collision increases, more collision will take place, and hence more chances of having effective collision. So rate of reaction increases. ठीक है बेटा, on increasing concentration of reactants, there are more particles in a given volume. The frequency of the collision increases, more collision will take place, and hence more chances of having an effective collision. So the rate of reaction increases. The second is the effect of pressure. And this effect of pressure is only for gases. This is only for gases. There's no effect of pressure on the molecular system or on the reaction in which you have a liquids or solid involved. This is only for gases. So on increasing pressure, the rate of reaction increases. As there are same number of particles but in less volume. The frequency of collision increases, and hence more effective collision takes place. ठीक है बेटा. So key point ये है कि yes, we all know what is the effect of pressure on the rate of reaction, but we don't know how to explain it in 2-3 lines if they ask the same question in paper 2. ठीक है ना. तो wording clear होनी चाहिए कि on increasing pressure the rate of reaction increases because there are same number of particles. अब बढ़ेंगे नहीं. We get the same amount of product. Okay, in a less volume, they come close to each other. The frequency of collision increases, because of which there are more chances of having an effective collision. The third thing is not about the number of collision. The third thing is about the energy of collision. Okay, na? So can I say that on increasing temperature, the average kinetic energy of all the particles increases? Agree? टेम्परेचर बढ़ाने से सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है. दे कोलाइड मोर विगरसली एंड हेंस मोर इफेक्टिव कोलिजन टेक्स प्लेस. ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, लिख लेते हैं. ऑन increasing temperature, the average kinetic energy of all the particles increase. They collide more vigorously and hence more effective collision takes place.
So rate increases. ठीक है बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, द इफेक्ट ऑफ temperature and catalyst as well can also be explained by using Boltzmann distribution curve. ठीक है, by using Boltzmann distribution. अच्छा, इससे पहले जो हमने इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, दिस इज एग्जैक्टली द सेम as it was in O level. That's the only thing which is from A level. ठीक है, which is Boltzmann distribution. अच्छा, नाउ आंसर वन थिंग, एक बात बताइए, आपके पास एक मॉलिक्यूलर सिस्टम है, यू हैव रिएक्टेंट्स प्रेजेंट, ठीक है, लेट्स सपोज यू हैव टेकन 100 cm क्यूब, या आपने 10 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यू हैव टेकन 10 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है, और एक कंटेनर में उसे रख दिया, क्या सारे पार्टिकल्स की एनर्जी एक जैसी होगी? है ना, अगर सबकी एक जैसी होती तो या तो सारे प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते, सबकी हायर देन एक्टिवेशन, या सारे में से कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर रहा होता. देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल. There are some particles with very less amount of energy. There are many particles with intermediate amount of energy. Some particles have high amount of energy, and very few particles having an energy value equals to or greater than activation energy value, and only those particles will form product. ठीक है, तो if I draw this on a graph, इसका एक अगर मैं normal distribution draw करूं, तो देखो normal distribution कुछ इस तरह दिखना चाहिए. ठीक है, यहां पर ऑन द एक्स एक्सिस आपके पास होगा एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, वाई एक्सिस में कुछ भी नहीं, यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं. क्लियर? एंड द शेप ऑफ द ग्राफ इज समथिंग. ओके, जीरो से स्टार्ट होगा एंड इट्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. इफ दिस वुड बी द काइनेटिक, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू, अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू है, if this is, so only these particles will form product. है ना, सिर्फ ये वाले पार्टिकल प्रोडक्ट फॉर्म कर. ठीक है बेटा, so this is the distribution of the energy. The area under the curve represent the number of particle with that amount of energy. So can I say that this normal distribution, which is called the Boltzmann distribution, can be divided into 3-4 sections. This is the region of the particle with very low energy, and this middle wala is the region with the इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी, बल्कि रीजन थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, यहां से यहां तक. ठीक है, सो दिस इज द रीजन where the particles have intermediate amount of energy, and this is the region where the particles have very high amount of energy. So अगर मैं इनको different नाम दे दूं, this is the region 1, region 2,
and 3, and this is region number 4. सही है? So इस तरह एक्सप्लेन करना ये ज्यादा अच्छा रहेगा. So let's try. Number 1, region 1 में particles with low energy. ठीक है बेटा. Region 2, intermediate energy. Region 3, high energy. Region 4 क्या है? Energy greater than activation. ओके, सो आई एम जस्ट स्टेइंग हियर फॉर अ व्हाइल. एक दफा अगर आपने ड्रॉ नहीं किया है तो आपसे ड्रॉ कर लीजिए. बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, it is basically the distribution of the energy of the particle. It is divided into 3-4 regions. The region 1, the particles have very low energy value. Region 2, the particles have intermediate amount of energy. Particle 3, high energy, and particle 4, energy greater than or equal to the activation energy. ठीक है? Now, if I ask you to describe Boltzmann or define Boltzmann distribution curve, in exam, they ask you to draw the Boltzmann distribution curve and describe it. ठीक है ना? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके बारे में? It is the distribution of energy of particles at any given temperature. There are some particles with very low energy, many particles having intermediate energy, few particles having very high energy, and very few particles having energy greater than activation energy. ठीक है बेटा, so this is the description of Boltzmann distribution curve. Whenever they ask you to describe Boltzmann distribution curve, बस आप ये describe करेंगे कि it is a distribution of energy. कुछ particles के बाद बहुत कम energy है, बहुत सारे पार्टिकल्स के पास इंटरमीडिएट है, कुछ के पास हाई है, और बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके पास इंटरमीडिएट अमाउंट ऑफ जिनके पास जिनकी एनर्जी वैल्यू इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है? नाउ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने डिस्क्रिप्शन तो दे दी थी ऑन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन.
ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड यू कैन सी द 90% क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर इज फ्रॉम दिस इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सही है? मुझे बताओ, अच्छा पहले आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दोबारा से। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। द एनर्जी इज ऑन द एक्स एक्सिस, यहां पर हमारे पास एनर्जी है, यहां पर लिख देते हैं दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, and this is basically going to be at any given temperature. अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो आपने ड्रॉ किया है उसकी शेप इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो, तो हो सकती है, चल सकती है, कोई मसला नहीं है। इट इज अ क्वालिटेटिव इन टर्म्स ऑफ शेप। ठीक है, एंड इफ दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू and only these particle will form product। ठीक है, तो सिर्फ ये पार्टिकल्स आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। क्लियर? अब मुझे बताइए, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर क्या फर्क आएगा? तो जो लोअर एनर्जी वाले हैं दैट मूव टूवर्ड्स इंटरमीडिएट, जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो हायर पे चले जाएंगे, एंड देयर आर मोर पार्टिकल्स हैविंग अ एनर्जी वैल्यू इक्वल्स टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, सो आपके ग्राफ की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगी? यहीं से शुरू होगा, द होल ग्राफ शिफ्ट टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है ना, द होल ग्राफ will shift towards the right hand side. If the activation energy value remains same, now you have that much more particles that can form product. So can I say that almost 10 Kelvin rise पे, at 10 Kelvin rise पे, the rate of reaction almost double। ठीक है, एक रफ सा आइडिया, almost 10 Kelvin rise पे the rate of reaction almost double। And these are basically the more particle form products। ठीक है, ये वाले पार्टिकल्स ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्लियर? हाँ देखो, दो काम करने हैं। यू हैव टू शिफ्ट द होल ग्राफ टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, क्योंकि ओवरऑल सबकी एनर्जी बढ़ रही है ना, तो सारे राइट साइड पे, हायर एनर्जी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे और पीक की हाइट कम हो जाएगी। हाइट क्यों कम होगी? क्योंकि हाइट पे इंटरमीडिएट वाले हैं, दे शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर एनर्जी। ठीक है ना, सो द होल ग्राफ शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड द हाइट डिक्रीजेस। बस ये दो काम याद रखना। लो टेम्परेचर पे क्या करना है? if they give you a higher temperature, ask for the lower temperature, you have to shift the graph towards left hand side और पीक की हाइट जो है वो ज्यादा बनानी है। ठीक है, and the explanation is all is same। On increasing temperature, the average kinetic energy of all the particles increases, and there are more particles having energy value equals to or greater than activation energy। One more thing, मुझे बताइए कि activation energy, if I decrease the activation energy value by using a catalyst, ग्राफ की शेप पे क्या फर्क आएगा? हाँ, कोई फर्क नहीं आएगा। ग्राफ में क्या चेंज आएगा? यस, एक्टिवेशन एनर्जी यहां मार्क हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू हैव दैट मच मोर पार्टिकल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू। सो कैन आई से दैट दिस इज ई ए विथ कैटलिस्ट। ठीक है, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विथ कैटलिस्ट। लेट मी चेंज द कलर। क्या ही अच्छा हो जाए इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर एंड यूज अ कैटलिस्ट, तो कौन और ऐड हो जाएंगे? ये रीजन भी ऐड हो जाएगा, है ना। इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर एंड यूज अ कैटलिस्ट, तो ये वाले रीजन के पार्टिकल्स भी ऐड हो जाएंगे। जस्ट इन केस, टू इंक्रीज इफेक्टिवली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, हम दो काम कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड ऐड अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि यू कैन इजिली
Identify that which one is with catalyst and which one is without catalyst. देखो, you should be able to draw this Boltzmann distribution curve at normal temperature, at 10 Kelvin rise in temperature, with activation energy and without activation energy. इसको भी हम EA ही mark करेंगे, ठीक है? This is the EA with catalyst. Done है? यहाँ तक बात समझ आ गई? Now, let's talk about the last thing, which is about the catalyst. How catalyst work? Effect of catalyst. In temperature third, the naam hamara third one. That's the fourth one, which is the effect of catalyst. So can I say that catalyst increase the rate of reaction by decreasing activation energy value by performing the same reaction through an alternative route with a lower activation energy value. Okay, let me write it down. Catalyst increases the rate of reaction by decreasing the activation energy value. By performing the same reaction through an alternative route with lower EA value. EA is activation energy. ठीक है बेटा. Now, आपको याद होगा ओ लेवल्स में आपने एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई थी for a reaction. Let's suppose there's a chemical reaction, and in this chemical reaction, हमारे पास यहाँ पर होती है enthalpy, है ना, जिसको हम H से represent करते हैं, which is in a joules per mole. And if this is the chemical reaction going through a higher activation energy value, this one. And this is reactant and this is product. Now in this reaction, this one is basically delta H enthalpy change. And this one is the, yes, this one is EA activation energy. If we use a catalyst, तो क्या होता है बेटा? Activation energy का barrier जो है वो कम हो जाता है. Now this is the EA value with catalyst. A question है, is there any change in the enthalpy change with catalyst or without catalyst? कोई change आ रहा है? No change. एक ही point याद रखिएगा, आगे एक chapter में हमारे काम आएगा. No matter reaction proceed by any path, if you have the same reactant giving you same product, there's no change in the enthalpy change value. ठीक है? Now, if any reaction proceed by two steps, सुन रहे हैं मेरी बात? अगर कोई रिएक्शन टू स्टेप्स में हो रहा है तो इसकी एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम किस तरह होगी? नाउ देयर आर टू एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू. अभी आप ड्रॉ नहीं करिएगा, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं कि इफ दिस इज अ रिएक्शन दैट कैन प्रोसीड बाय टू स्टेप्स, तो उसकी एंथैल्पी प्रोफाइल डायग्राम कुछ इस तरह से बनती है. पहले एक एक्टिवेशन एनर्जी आती है, ठीक है, स्टेप 1 की, देन स्टेप 2 की, और फिर ओवरऑल आपके पास जो भी चेंज आ रहा होता है एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, आप उसके अकॉर्डिंगली उसे मार्क करते हैं. ठीक है? This is product reactant and this is giving you product. So this is the activation energy of a first step and this is the activation energy of a second step. EA
Step 2, EA, step 1. ठीक है? And what should be the enthalpy chain? This is the enthalpy chain. Delta H overall होता है हमेशा. ठीक है बेटा? This is for two-step reaction. You always have two activation energy value for both step. चाहे वो step 1 का अलग दिखाएंगे और step 2 का अलग दिखाएंगे. There is some knowledge required कि आपको कि भाई पहली एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी एंड सो ऑन, इस तरह की चीजें. नो, यूजुअली द फर्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी इज हायर, द सेकंड वन इज लोअर, लेकिन ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं. ठीक है? तो आई होप कि बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और कैटालिसिस से रिलेटेड ये बातें दोबारा से रिवाइज हो गई मोर लेस. आई थिंक ये सारी चीजें आप ओ लेवल से जानते थे, है ना? कुछ नया तो नहीं है इसमें. हाँ, दिस बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज समथिंग न्यू. क्लियर? और एक और थोड़ी सी बात हम ऐड करेंगे एंड दैट्स वी डन विद दिस चैप्टर. ठीक है? चैप्टर दिस इज स्मॉल चैप्टर. देखिए, यू हैव अ redox reaction, rate of reaction, and states of matter. These are very small chapters. ठीक है? From now onward, we have some main topic like enthalpy changes, chemical equilibrium, periodicity, group 2, group 7. ये सारी अब मेन टॉपिक हमारे हैं. एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाज द मेन टॉपिक एज वेल. उसके बाद ये सारे स्मॉलर टॉपिक हैं जिनकी एग्जामिनेशन वेटेज P1 यानी MCQs की ज्यादा है. नाउ द टॉपिक इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. ये ड्रॉ करना है. ठीक है? टाइप्स ऑफ कैटालिसिस. Catalysis is a term used for the technique. You can say the technique of using a catalyst. ठीक है? लेकिन art of using a catalyst आप इसे कह सकते हैं. There are two types of catalysis. Homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis. ठीक है? You done with the diagram? No, this is the thing. There are two types of catalysis: homogeneous catalysis and heterogeneous. One by one, दोनों को define करेंगे, but I'm going to define it. Okay, इसी तरह कर लेते हैं. Number one, homogeneous catalysis. Catalysis in which reactants and catalyst are in same physical state. अगर लिक्विड है तो सारे लिक्विड होंगे, और अगर गैसेस हैं तो सारे गैसेस. ठीक है? सेम फिजिकल स्टेट का मतलब एक जैसा, और एक जैसे के लिए हम होमोजेनियस की टर्म यूज करते हैं. ठीक है? इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, अ वेरी कॉमन एग्जांपल, SO2 gas plus O2 gas
ऑक्सीडाइज टू सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, this reaction is catalyzed by NO2 gas, and this reaction is basically the same reaction you've done with an O level for acid rain, है ना? The sulfur dioxide oxidized to sulfur trioxide in the presence of NO2, nitrogen dioxide, and this is a big contributor of acid rain. एक रिएक्शन ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा, but you guys are going to do it in a lab, in which is the reaction of potassium iodide with thiosulfate. But I'm going to give you the ionic equation. You have 2I negative aqueous plus S2OH 2 minus aqueous, ये thiosulfate है, forming I2 aqueous plus 2SO4 2 minus aqueous. और यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज होता है वो आइदर आयरन 2 प्लस एक्वस भी यूज कर सकते हैं और आप 3 प्लस एक्वस। यू कैन सी रिएक्टेंट भी सारे एक्वस और कैटलिस्ट भी एक्वस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको ये एग्जांपल याद होनी चाहिए। ऊपर वाली एग्जांपल तो आप नाइट्रोजन एंड सल्फर में भी याद कर लेंगे। ठीक है, and I said you can use iron 3 plus as a catalyst as well. या तो iron 2 plus यूज कर लें या iron 3 plus is the same thing. Second, heterogeneous catalysis. Catalysis when reactants and catalysts are in different physical states. ठीक है, और इसकी कॉमन एग्जांपल आप लोग ओ लेवल से पढ़ते आ रहे हैं। N2 gas plus 3H2 gas forming 2NH3, the formation of ammonia by Haber's process. यहाँ पर आयरन सॉलिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, तो दिस इज हेबर्स प्रोसेस। हेबर प्रोसेस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमें ये इक्वेशन 2SO2 gas plus O2 gas forming 2SO3 gas, and I'm talking about contact process. हाँ भाई, कैटलिस्ट याद है, V2O5 solid. You can see reactant vanadium 5 oxide या vanadium pentoxide. ठीक है, and you can see in both of these example आपके पास reactant gas form में है और आपका catalyst is in a solid form. ठीक है, so these are the two mode of catalysis: homogeneous catalysis and heterogeneous catalysis. Homogeneous when the reactant and the catalyst are in the same physical state, and these are the two common example, याद होनी चाहिए आपको। heterogeneous catalysis when the catalyst and the reactant are in a different physical state. Very easy topic. You should revise it by revising the Boltzmann distribution curve. जो चीजें आपको आनी चाहिए वो effect of temperature, concentration, pressure, catalyst on the rate of reaction आपको explain करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात आपको Boltzmann distribution curve normal temperature पे at 10 Kelvin rise in temperature या higher temperature पे with catalyst without catalyst draw करना आना चाहिए। Energy profile diagrams, which is these diagrams, ये diagrams आपको आनी चाहिए। enthalpy changes में इनको दोबारा से पढ़ेंगे हम। और दूसरी बात, different mode of catalysis आपको पता होने चाहिए। In exam they ask you define different mode of catalysis and give two example
in which iron or its compound used as a catalyst. तो कौन सी दो एग्जांपल दोगे? हेबर्स प्रोसेस और I नेगेटिव और S2O8 थायोसल्फेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन. इसको हम रिएक्शन काइनेटिक्स नहीं बल्कि रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं. एंड वी डन विद दिस टॉपिक, और वी सी सम क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक इन अ नेक्स्ट सेशन. अच्छा, अब